sepsis in particular area, infection spread over the wall of vessels, formation of abscess, encephalitis. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक यानी कि सेरिब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट, सेरिब्रल हेमरेज, यानी कि इसमें क्या होता है, सेरिब्रल हेमरेज भी बोल सकते हैं इसको, एंड सेरिब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है, स्ट्रोक हो जाता है। डेफिनेशन देखेंगे हम। स्ट्रोक इज एन इन्फेक्शन डेथ, यानी कि स्ट्रोक क्या है, एक तरह का इन्फेक्शन है, डेथ ऑफ अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ब्रेन। यहाँ पे क्या बताया गया कि इन्फेक्शन यानी कि डेथ हो चुकी है किस चीज के, स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ब्रेन ड्यू टू इंटरप्शंस ब्लड फ्लो दैट रिजल्ट टू न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट और लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शंस। तो फ्रेंड्स, ये है स्ट्रोक। इसका डेफिनेशन भी यही है कि ये क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है, यानी कि डेथ हो जाती है ब्रेन के स्पेसिफिक पोर्शन की, किसकी वजह से, इंटरप्शन ऑफ ब्लड, यानी कि कोई भी ट्रॉमा हुआ, कोई भी एक्सीडेंट हुआ उसमें, या फिर जो भी ब्लड में इंटरप्शन हुआ, जो भी ब्लड फ्लो है उसमें इंटरप्शन हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट हो जाएगा और लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, ब्रेन के फंक्शन में भी लॉस हो सकता है। कॉजेज क्या होते हैं इसका, थ्रोम्बोसिस इसका कॉज हो सकता है, ब्लड क्लॉट इन द ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन और नेक। ये इसकी इमेज दिखाई गई है। कॉजेज ऑफ सेरिब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट, CVA। कॉजेज और क्या हो सकते हैं, सेरिब्रल इम्बोलिज्म, इश्चेमिया, वेस्कुलर कंप्रेशन, सॉरी, आर्टियल स्पैज्म। तो फ्रेंड्स, सेरिब्रल इम्बोलिज्म देखेंगे, द कंडीशन इन विच एन इम्बोलस बिकम लॉज इन एन आर्टरी एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। Ischemia, low blood supply in any part of brain. Vascular compression, venocompression, arterial spasm, artery contraction. रिस्क फैक्टर्स देखेंगे, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस, कैरोटिड ब्रिप्ट, रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर्स, सिगरेट स्मोकिंग, इमोशनल स्ट्रेस, फैमिलियर हिस्ट्री। देन देखेंगे प्रीवियस ट्रांजिएंट इश्चीमिया अटैक, एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ओपेसिटी, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो फ्रेंड्स, ये है रिस्क फैक्टर। देन देखेंगे आगे पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे फ्रेंड्स। इसमें क्या आता है, सबसे पहले आता है थ्रोम्बोसिस, इश्चीमिया इन ब्रेन टिश्यू, एडिमा एंड कंजक्शन इन द ब्रेन टिश्यू, जनरल डिसफंक्शन ऑफ ब्रेन, एम्बोलस, necrosis and edema in brain tissue, sepsis in particular area, infection spread over the wall of vessels, formation of abscess, encephalitis, sorry, aneurysal dilatation, cerebral hemorrhage, finally paralytic attack. Clinical manifestation is the abnormal narrowing of passage or opening, such as blood vessels or heart vessels, stenosis of greater blood vessels in neck, paralysis, muscles weakness that varies in its, hemiplegia, paralysis of one side of body. It is caused by disease affecting the opposite hemisphere of the brain. Transient loss of speech, parasynthesis, spontaneous occurring abnormal tingling sensation, PMS, and needle symptoms of part of damage to a peripheral nerve. Then देखेंगे specific deficit after CVA. Hemiplegia, aphasia. Hemiplegia is known as paralysis of one side of body. Aphasia, defect in using and interrupting the symbols of language. Agnosia, unable to recognize the object. Asphaxia, it is a condition in which a client can move the affected part but cannot use it for specific purposeful actions. Kinesthesia, alteration in sensation. Incontinence, inability to control the bladder and bowel. Common clinical manifestation: headache, seizures,
retinal hemorrhage, vertigo, fever, disorientation, weakness, reflex changes, depression, vomiting, nose bleeding, epistaxis, motor and sensory disturbance, nuchal rigidity, confusion, memory impairment, language disorder, improper sexual abnormalities, numbness. Diagnostic evaluation is physical examination, computer tomography, PET, positron emission tomography, CSF culture, MRI, history collection, angiography, echo, encephalography, general blood and urine examination. Management, medical management of client after CVA is directed toward preserving life, minimizing residual deformity, reduce ICP, preventing reoccurrence. Pharmacological management, mild analysis example ibuprofen, steroids, anti-inflammatory, osmotics, diuretics for edema, example mannitol, anticoagulants, example heparin, antihypertensive agent, example varapamil, anti-epileptics, example phenytoin. Dietary management, fluid diet is given because patient is unable to swallowing properly. Surgical management, it depend upon the site of infection and on particular causes. If ICP is above than 30 to 40 mmHg, then only surgery will performed. Surgeries are evacuation of hematoma, carotid endarterectomy, surgical removal of lining of artery. Nursing management is nursing diagnosis, altered cerebral tissue perfusion related to increased ICP, impaired physical mobility related to paralysis, self care deficit related to paralysis, risk of injury related to paralysis, risk for aspiration related to loss of swallowing reflexes, imbalanced nutrition less than body requirement related to inability to swallowing paralysis, impaired verbal communication related to aphasia, altered throat process related to impaired cerebral blood flow, altered sensation. Nursing care plan for cerebral vascular accident. Nursing diagnosis. तो फ्रेंड्स आज देखेंगे हम नर्सिंग केयर प्लान फॉर सेरिब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट। सबसे पहले आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस, इंटरवेंशन एंड इवैल्यूएशन। नर्सिंग डायग्नोसिस में फर्स्ट डायग्नोसिस है हमारा अल्टर्ड सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू इंक्रीज आईसीपी। इंटरवेंशन है मॉनिटर आईसीपी रेगुलरली, इवेल्युएटेड हेड एंड असेस न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, एडमिनिस्टर मैनिटॉल, इवेल्युएशन आईसीपी विल रिड्यूस। सेकेंड है impaired physical mobility related to paralysis. Intervention है इसमें maintain the position of patient always. Patient position on unaffaired side should not place the pillow under the knee of patient. Evaluation is physical mobility is maintained. Third diagnosis is high risk for injury related to paralysis. Maintain bedside rail, should not leave client alone, use of effective lighting. Evaluation is patients having safe and reduced risk of injury. Diagnosis number 4, nutrition imbalanced related to inability to swallow. Intervention is check patient's weight and nutrients intake daily. Visitor entry should be restricted. Assess like and dislike of patient. Evaluation, patient nutritional status has improved. Diagnosis number 5, altered body temperature related to disease process. Monitor temperature at regular intervals. If hypothermia, provide hot application. If hypothermia, administer antipyretics drug. Maintain room temperature of patient. Evaluation is body temperature of patients is normal.
तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड ये था हमारे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।